Assalamu alaikum ji. Today we are starting with the program management life cycle, program life cycle management, and that is one of the domains, and not only one of the domains, but it is also the most important domain in the sense that it has got all the 9 knowledge areas enclosed in it. What we are going to from the next chapter onwards, we are going to address each one of the 9 knowledge areas which we already know from PMBOK. Here the 9 knowledge areas are the old 9 knowledge areas of PMBOK. The 10th knowledge area, stakeholder management, which is in PMBOK, is not included here because stakeholder by itself is a domain, and we have already studied that. So in the life cycle management, we will have only the 9 knowledge areas, and first we'll look at the life cycle itself. The life cycle is divided into the various phases which we discussed earlier also, but now we are going to go into the detail. In program life cycle, we will have the program definition phase, which will include program foundation and program preparation. Then we will have program benefits delivery phase, which will consist of 3 things. That would be the components, the component projects or other components, component planning and authorization, component oversight and integration, component transition and closure. So this whole phase deals with the components. The components are planned and authorized, meaning the charter is given to each one of the components, and ultimately when the component is transitioned and closed, the benefit has delivered. That is the point when a component is considered closed. After all the components have delivered and closed, we will get into the program closure phase, and that would consist of the overall program transition and the program closeout. We'll also see the mapping of all of these phases and its components to the supporting activities. By supporting activities we mean the 9 knowledge areas. So you will see how they are mapped to the 9 knowledge areas. Programs are undertaken to deliver benefits by developing new capabilities or enhancing existing capabilities. That is exactly what we know. We have been talking a lot about the benefit delivery. Here is the time in the life cycle where we actually get those benefits delivered. So the 3 phases are very distinct here. In the first phase, we are preparing for the program. We are, pampering the program. We are developing it. We are laying the foundation of it. We are giving the mandate and charter and all that. This all happens in the very first phase. In second phase, where we talk about the benefit delivery, this is all the dealings with the component until the components are finished. And in the last phase, we are formally closing it down. So in order to accomplish this goal, program managers integrate and manage multiple program components. And you understand, after so long we have been talking about the components, everything. Components could be sub-programs, they could be projects, they could be other work. And this all is done to. So we designed what benefits are to be intended, and now through these components we are making sure how these components are being delivered. This domain spans the duration of the program throughout, from start to end, and contributes to and receives support from other program domains. You see, as I said earlier, all the other domains we studied, stakeholder engagement and whatever,
all those domains are actually running in parallel with the life cycle management domain. So everything is happening in parallel. Therefore, they are not, inclusive into it. Here, what we are talking about is only the delivery. And this would be in the next chapter, we will be talking about all of those supporting areas, which it calls supporting areas are actually the 9 knowledge areas. Supporting areas are to be covered in the next chapter, and that will map each and every process which happens here in the life cycle. So this chapter actually is defining the program life cycle. So as we said, we want the program to be started. We wanted to deliver the benefits which were intended, and then we want to close it down. As we said, people think that programs are not like projects and they will never finish, but programs also have to be closed. The detail of those efforts are dependent on the type of program. Program typically begins when funding is approved or when the program manager is assigned. So these are the preparatory work when the program objectives are defined, the funding is procured, the permission is given, the program manager is assigned. All these things are the preparations. After you have done that, then only then can you be, start designing the components and their permission and all that. That would come in the next phase. This is often considered considerable effort expended prior to the defining and approving of program. So, as we now understand that program being a very large entity, looking at a big strategy to accomplish, we have to set up a very strong foundation for that. There are many arrangements to be made, and therefore we have to work towards these things first before we can formally give permission to start the program. As you have already studied in the earlier domains like program strategy alignment and program governance, other things are happening. So they will align with it. They will align with it. They are not exclusive. They're not, completely separate. But yes, they are separate domains, but they run in parallel with this. During program delivery, components are authorized, planned, and performed, and ultimately they deliver the benefits. In the last phase, when the program closure is being done, is the stage where the program governance board approves it, which were intended are achieved, and they are validated by the governance board. They have determined other reasons for closure. That could be another reason. If the benefits are not being delivered and program governance board decided that this program is of no use or should be closed down at whatever status it is, it can be closed in that condition also. Maybe there is a change in the strategic direction with which the program is no longer aligned, or the program benefits may not be achieved. In those situations, program could be closed. But formally, if we talk about a normal program closing, that means it has delivered its benefits, it has properly transitioned all those benefits to the intended beneficiaries, and the program is being closed. And otherwise, it can be closed due to some other reasons as well. As we just talked about, there are 3 phases: program definition, program benefit delivery, and program closure. Definition phase. Program definition activities usually occur as the result of a strategic plan. When we have a strategy to accomplish, which is ultimately to fulfill an organizational benefit or desired state,
within an organization's portfolio, that is the point when the need for this program has arisen. So from the portfolio management body, there might be a number of steps to be taken, a number of activities to be started before the program definition phase can start. So these are the arrangements. These are kind of feasibilities or assurances, and they have to be sure about it, what they are entering into. So they are basically there to develop the concept of what the outcome or the outputs would be. In case of program, mostly it is the outcome they are talking about. What is the scope frameworks? What are the initial requirements? What are the general timelines, deliverables, and accepted cost guidelines? These things are established by the portfolio management. And here, program has yet not started, but we have seriously started thinking about starting it, and therefore portfolio is laying the groundwork for that. Primary purpose of this phase is to elaborate the business case, our strategic plan objectives, and expected program outcomes. So we just want to have a clarity what it is we want to start, what this program would do, and whatever it is set out to do, will it be justified? Should it really be done? So this is elaborated through a business case or a strategic plan objective and expected program outcomes. So these elements, the business case must exist, the strategic plan objectives must be established, and the program outcome must be in your mind. So this is done initially with updates to the business case and program plan, and later documented into the program roadmap. As you see, once we are clear about these things, as you understand, only then we can have, with that clarity of mind, we can have the program roadmap. That. So things will be much easier now, because the terms, the documents, the activities we are trying to discuss here are already, we have studied them in other domains. But now it is the life cycle in which we are trying to fit them in. Once that roadmap is created, then we naturally would work further towards development of the program management, and ultimately by the end of this phase we would have an approved program management plan ready with us, available with us. Program definition generally falls into two distinct but overlapping subphases. And that I initially said that there are two parts of program definition. One is the program formulation and one is a program preparation. We will discuss each one of these, but program formulation was where the strategies are being understood and all that, and program preparation is where the program management plan is being developed. Program manager is selected during the formulation phase, selected and assigned during the program formulation subphase, you can call it the subphase. In program formulation, sponsoring organization assigns a program sponsor. So we do now understand the role of program sponsor is there. Governance, maybe we can have our governance board and program sponsor may or may not be there, or it could be, governance board could be performing the responsibilities of the program sponsor. We also said that it may be possible that the governance board is composed of only one person, and that is the program sponsor. That is also the case. But you see, once we are talking about it, we must consider these roles as separate, but naturally, as per your need, you can, somehow reorganize it. You can give appropriate importance to whichever role you want. But program sponsor is a role, and that has to be assigned before
in the program formulation before anything else. So once the program sponsor is there, now it is his key responsibility to include the securing of financing for the program and selecting the program manager. So the selection of the program manager falls under his responsibility. And naturally, as we understand from our previous talk, this is the person who is championing the program. He is the program champion, or you can say he is the boss. And naturally, he is the person who actually have to coordinate and link himself to all the major sources from where the fundings are coming, or for that matter, from where the permissions are coming. And naturally, in this cycle, program governance board will also be the one to whom the program sponsor will be talking. So program sponsor, once have established those links with the program governance board and the financing body and all that, then would select the program manager and assign this job to him. The sponsoring organization, and the program manager, all these three things. Sponsoring organization is the organization which is as a champion, and program manager has been assigned by the sponsor for managing the program. So what they do together, they all ensure that the program financing is properly secured. Although we said it is the responsibility of the sponsor, but naturally he will be asking this from the sponsoring organization, and program manager would be supporting him. Then once they have done that, they will initiate studies and estimates of cost, scope, and resources. So what are these studies? This could be, here we talk about the business case or the feasibilities, or howsoever we want to ensure that this program, which has been selected by portfolio, is valid, should be done. Once they have found it feasible, they would go on with the initial risk assessment, which is again the part of that business case. So they will develop the initial risk assessment, and then after having done all that, the program charter and roadmap would be created. So this is all happening in program formulation. Program preparation commences upon formal acceptance of program charter. So this is where the program manager's role is ultimately taking over. Program manager is taking over as soon as the program charter is being given to him. Although he was working in conjunction with the program sponsor and the sponsoring organization in securing the financing and all that, and helping them develop till program charter, but now is the work. So the output of the program formulation may continue to be updated through the program definition phase. So once the formulation is complete and we enter into the next subphase, these documents we created in program formulation would continue to be updated, as we understand in the case of any plan that we progressively elaborated over the time. So here, why are we doing it? Because program, again, a very huge body, a huge structure with a lot of uncertainties. Whatever we have created may need updates or amendments. So these amendments would carry on. Then comes the program preparation. This is again in definition. This is a second subphase, and there, as I said, there is a kind of overlap in program formulation and program preparation, because program formulation, what we have formulated, those documents may be updated and repeated and updated again in program preparation. But classically speaking, program preparation should have those inputs to move on. No matter if they are being updated, but they should be available as if the program preparation can go on.
So in this program, organization is defined, an initial team is deployed, and they formally work on the program management plan. Program management plan is developed based on the organization's strategic plan, business case, program charter, which we have created earlier, and other output from program formulation. You see, in the previous one, in program formulation, we created until, and here in program preparation, what we are trying to do is we are trying to translate that into a program management plan. And while we are doing that, we are saying that we must ensure that the documents provided to us, we keep in alignment with those. And they were the organization's strategic plan, they were the business case, and the program charter. And naturally, all of these three things have to be considered when I'm creating the program management plan. And if there are any other output from the program formulation, they all have to be considered here. This plan includes candidate program components and management plans. So here we have to elaborate on the components which are to be included in our program and how they will be achieving our organizational benefits, the desired or intended benefits. How are they going to be achieving that? So what are we going to do in this subphase? The basic responsibilities are the establishment of a governance structure. So the governance structure must be properly earmarked, properly established, and then the governance board would be made responsible for, authorizing anything, for clearing anything which happens in the program when it is in execution. Deploying the initial program organization. So whatever the initial team the program manager needs to have, that has to be brought on board, and developing the program management plan. See, these are the three basic activities to be done in program preparation. Program benefit delivery plan must be properly prepared, properly reviewed and checked, and formally approved by the governance body, as if we can enter into the benefit delivery phase. You can equate the benefit delivery phase to the execution of the, as it was the execution in projects. But here, this is the execution of the program. But interestingly, even if we enter into the benefit delivery phase, that is the start where the components are being, unrolled. So there would actually be happening some planning also for the component, but as far as the planning part for the program is concerned, that is done. That is done in definition phase. But the planning part of the components will continue in the benefit delivery. It is not only the benefit delivery will be the planning, but it would be execution of those components. It would be, closing of those components. And closing here does not mean the closing of the projects, but the benefit delivery, transition, sustainment, everything is included in that as far as the components are concerned. So all the components will actually deliver. And this benefit delivery phase will continue till the end of the last component when it finishes. So it starts with the very first component when it starts delivering benefits. So and it finishes only when the last. But that does not mean that the program work is complete. Program will actually consolidate those benefits and ensure that all those benefits have reached as a program to the beneficiary. So that would be the third phase we would be getting into. So programs are typically authorized by a program governance board.
as we understand the role of the governance. So they will be authorizing the program, and not only the program. When we enter into the benefit delivery phase, the governance board would keep coming and playing its role with each component's permission of starting and finishing. So every component would have a mechanism where the governance board will actually approve its beginning and end of that component. Okay. Then is the program benefit delivery, second phase of this life cycle. Now this phase is iterative in nature because all the components will go through the whole cycle of planning of the components, integrating those components, managing them, and for what purpose? Ultimately, to facilitate the delivery of the intended program benefits. Well, this is our objective, delivery of the intended program benefits, but this benefit delivery phase is the facilitation. It makes it possible for all the components to be able to deliver those, right? So this is not the finish of everything. Naturally, after that, we have yet another phase, and that would also be in the program benefit delivery, but that would be from the program level. But this is component delivery, and program manager is doing only the facilitation. He is making it possible. He is making it easy on the components as if they can deliver the intended benefits, whatever is expected out of each one of those components. This is in no ways the consolidated benefit. This is not the consolidated benefit. Program team provides oversight and support to position the components for successful completion. So program manager along with his team, they play a role of a facilitator. They just tweak the things, they don't interfere. They just advise the respective component managers as if it is possible that they are on the right path of delivery of the intended benefits. Component work and activities are integrated under the program umbrella to facilitate the same thing, the management and delivery of the program benefits. So the components have their own activities, their own work. The work in this phase includes the program itself and the component. Components have their own activities, but the program itself does have its own activities. And those activities are what? These activities are, we need people, we need some activities to facilitate. There might be some integration work to be done. So we need some workforce, and there has to be some activities at the program level which are actually there to facilitate other components. So there will be some work in the components and there will be some work in the program, and all the work which is within the program for integration purposes, for facilitation purposes, that much is under the control of the program manager directly. All other work which deals with the components themselves are under the component manager's control, and component managers are being advised continuously, facilitated continuously by the program manager and his team. I hope this is slightly clear. So now in benefit delivery, this phase will see the preparation of individual component management plans. You could say project management plans. If it is a project, sub-programs, they would have their own management plans. Or if there is some other kind of component, that would have its own plan.
and that would include all the knowledge areas, as in case of PMBOK and project management, which includes the cost management, scope management, and all those things are included. But these are the project level documentation, or whatever the component level, I should say. Why we use word component? Why should we not say project? Because it is not necessarily a project. It could be a sub-program, it could be a project, it could be other work. So whatever the component is, we don't know right now, but those developed by the component manager at their component level, and then all that work is integrated at the program level. So we will establish at program level how and when to communicate, coordinate, and integrate with other components. So there would be some, as I just was describing, there would be some work within the component, that is the component level work. There would be some work at program level which is responsible for putting it all together, that is the integrative work. And there would be some work to keep watching as if everything remains in alignment with the program direction. That would also be a program level work, and all these three types of works are being done for program benefit. So let me say it again, three kinds of jobs we do in program. The components working under the program will have their own activities. Those are called component level work. Then program manager, along with his program team, is also responsible for integrating all the components, and all the work done to integrate the work and facilitate the work of the components is called the integrative work. And the third thing is to keep checking the alignment with the program direction of each of the components and the overall alignment, that is the program level work, and that is the alignment related activities. To accomplish goals, manage changes, and mitigate risks and issues in order to position for success. Now, once we talk about facilitating the components in accomplishing their goals, what does that mean? Well, the component manager is responsible for accomplishing his goal. He would be working on it. But what if he needs help? He needs advice. He needs coordination. In that case, program manager and his team would remain available. They may advise them, maybe for the alignment sake, maybe for performance sake, how to set their goals, the components, how to set their goals. And if there is a change request from the component, who is going to approve that? Naturally, it is not going to the governance board. This is the matter of program manager, because a component has requested a change and program manager has authority. So he would be, program manager is a sponsor for all the components. Therefore, he would be the person who would actually be approving or advising on those changes. Then again, I would say risks and issues, primarily they are the responsibility of the component themselves. But as we discussed earlier, there might be certain risks which are affecting outside of the component. Like, there is a risk which is affecting more than one projects. Such like risks should be taken up at program level, and program managers should have a strategy devised for them. Same is for quality. If there is a quality issue which is common to more than one components, program manager will have to prepare a quality management plan for that. And about issues, we understand that there is always an issue escalation cycle developed by the organization, adopted by the program, and naturally it goes deep down to the components and projects.
So if there is an issue not unresolvable within the component, that would ultimately come up. Just a minute. Right. So, as I was saying, program facilitates interaction with the components for these purposes. So, any issues which are escalated from the component or the project or subprogram wherever, they have to be resolved by the program. And if they are not resolved by the program, then they have to be further escalated to the program governance board to whatever level they may. So whatever I am talking here is nothing new. We all know and understand that. It is just putting the thing in the right perspective, as if we can understand how the benefit delivery phase is going about. Now, programs have a significant element of associated uncertainty. What does that mean? We said programs are more uncertain than the projects. Naturally, they're larger in size. They have huge, longer durations, and their goals are also really not very certain. But when we talk about having a number of components, and every component has got its own uncertainty, the overall uncertainty at program level further increases just due to this association. While the program management plan and roadmap document the intended directing and benefits of the program, the full suite of program components may associated uncertainty is coming out of the components. The total impact of all the components, the total impact of uncertainty from the components is to be borne by the program. Therefore, programs become ultimately more uncertain. And to accommodate this uncertainty, program manager needs to continually oversee the components throughout this phase. That is why we are so closely watching the components, as if we can foresee any uncertainty coming from the component to our side, and we can take necessary actions well in time. So when necessary, we should replan for their proper integration or changes in the program direction through adaptive change. Component manager would be responsible for taking whatever actions within the component, but seeing the trends coming out of the components, program manager will also make certain changes and tweakings in his own program management plan. Maybe this whole strategy has to be, refurbished. Whole direction has to be refurbished. Naturally, with the permission of the governance board, naturally through a proper change control procedure at program level, but programs will also be highly, flexible towards their projects, as if they can adopt and change accordingly. Program manager is also responsible for managing this group of components in a consistent and coordinated way. All the what governance we are talking about here? We are not talking about the program governance here. We are talking about the component governance here. So the rules, the law for all the components to be governed by the program manager should be the same. There should be a consistency in that, and it should be a very well coordinated effort in order to achieve the results that could not be obtained by managing those components as standalone efforts. So if those components were running separately
each could have a separate governance mechanism, a separate sponsor, and naturally there should not have been any consistency and coordination amongst them. Now, one governance mechanism is coming out of the program, and that is, looking after all the components. Therefore, every component would be dealt in the same manner by the same rules. Therefore, we talk about the consistency and coordination. Each program component will iterate throughout the following component level subphases. So what happens within this benefit delivery phase? What are the subphases within it? So this all deals with the component level work, and that is, first of all, the components have to be planned and authorized. So if we compare it with the PMBOK, that would be initiation and planning. Initiating and planning of the components is happening in subphase component planning and authorization. Now, oversight and integration. That component oversight and integration, what does that mean? If I look at it from the PM component transition and closure. Now, as far as the closure is concerned, that relates to PMBOK closing process group, but transition is new, because when we were dealing with projects, we were not concerned about transition. Transition was not our topic. Here, because this component is part of the program, therefore, the benefits coming out of it must have to be realized and transition, and only then the component would be closed. This is the responsibility of program manager to ensure that the component transitions and closure does happen in this third subphase of benefit delivery. So in benefit delivery, we are going through planning and authorization, oversight and integration, transition and closure. So these are the three subphases we are going into. The phase ends when the planned benefits of the program are achieved, delivered, and accepted, or a decision is made to terminate the program. So that is another condition. When program is no more to be continued, then we can also close this phase, close the whole program right here at this phase. But if the things are all going natural, then we will achieve the targets, we will deliver the benefits, and we will get them accepted. And if that is done, this component is closed. Now, where are we talking about delivering these kinds of benefits directly from the component is probably in the case where the benefits are not to be delivered as a whole. Each component would be delivering their benefits and they would be transitioning to the beneficiary. But in the case of those benefits which are to be consolidated, put together, and only then they can be transitioned, though that is another case. But still, whatever, no matter what case it is, each component will have to deliver those benefits. So even if they are not to be transitioned here, at least they have to be delivered. It is not only the matter of the deliverable or the product being coming out of the component, it is actually the benefits being realized out of the components, and then is a matter of transitioning them to the beneficiary. First subphase, planning and authorization. So component planning is performed throughout the duration of program benefit delivery. Why and how? How is possible that we keep planning the component throughout the benefit delivery phase? Actually, we do not have only one component, and components are not all being planned in the very beginning of this the benefit delivery phase. Components are happening throughout. So some components which are to start in the very beginning of the benefit delivery phase are planned then. Some components would be, their planning would start later when those components are to be started. So this is not all components planning starts at the same time. So the last component may have its planning towards
the fag end of the benefit delivery phase. So that way, this phase continues, the component planning continues throughout the benefit delivery phase, as there are a number of projects or components being planned. So this is in response to the events that require significant replanning or new component initiation requests. It has given two reasons for component planning. Number one, as I said, that new components are coming in and they are to be planned at any time during the benefit delivery phase. And number two reason is that the plans we have already created would go through the progressive elaboration and they would be replanned all the time. So till the time a component is closed, the planning is open. Component planning includes the activities needed to integrate the component into the program. So this is important, that when you plan a component, do not plan it as a separate element. Components are not separate from program. They have to be planned to be integrated into the program. Their benefits are planned to be integrated into the program and to fulfill the objectives of intended benefits. So they will position each component for successful execution. If we are looking at it from the angle of the program, so all the components are to be integrated by the program, and only then they can be executing successfully. These activities involve formalizing the scope of the work to be accomplished by the component and identifying the deliverable that will satisfy the program's goals and benefit. See, why are we talking about deliverables here? Because we are talking about the components. Components deliverables are products. So we have to talk about deliverables, but ultimately we are looking at to satisfaction of the program's goals and benefits. We have to convert those deliverables into benefits, and that is part of my program management plan. How to convert those deliverables into the benefits, and naturally I am not closing down the component after the deliverable has been received to me. I will only close it down when it has delivered my desired benefits from the program point of view and it has properly transitioned. Otherwise I am not ready to give closure of this component. So therefore the benefits will be delivered from each of the components. Each component has associated management plan. Every component will have its own plan. You can call it project management plan or whatever other kinds of plans are required for even for transition plan, operations plan, maintenance plan, or whatever types of plans are required relevant to that component would have to be created depending upon the type of work under consideration. The appropriate information for each component plan is integrated into the associated plan for the program. So when these component plans are ready, we will show them, we will integrate them, we will show how they are integrated. This is to be shown in the program management plan, and we also understand program management plan was created and is also a living document, and it will also be updated progressively. This includes information used by the program to help manage and oversee the overall program. So if it is just like bottom-up kind of a planning, we are designing the components in detail and then we are improving our program management plan accordingly, and we are ensuring that all the things, all the components are properly integrated. So this refinement goes on. Program governance domain, as we have studied earlier, it provides us the guidance for processes leading to component authorization, how the components are authorized. So component authorization is the responsibility of governance board. So the charters for each project would actually be coming from the program governance. A number of activities are required to verify that the component properly supports the program outcome prior to the authorization. So before we can allow a new component to be started,
it has to go through a kind of a business case. It has to go through a proper program governance permissions. So what we studied in governance all applies here as far as the component start is concerned, authorization is concerned, or chartering is concerned. In the context of a program, some components may produce benefits immediately, while other components are integrated with others before the associate benefit may be realized. Now, that is exactly why I was not, really very certainly saying it, that the benefits are being delivered as are being transitioned as the components are closing. There could be a scenario where yes, a component has realized a benefit and it is being transitioned directly to the beneficiary. If that is not the case and that is not possible, then probably more than one components, once they have delivered, their benefits are unified and only then they can be transitioned. Or all the components, once they have delivered, so you see, this could be any one of these cases, and naturally it will differ from program to program. But in context of the program, we have to look at what exactly is our situation, and we have to plan accordingly. Each component team executes their associated plan and program integrative work. Whatever job is assigned to them regarding the integration, if the component is told that they have to wait for the benefit of another component and then they have to get it integrated and then only can they transition, then this becomes responsibility of that component to ensure that interaction. And overall guideline would be provided by the program team along with the program manager. Throughout this activity, components provide status and other information to the program manager and to their associated component, so their efforts may be integrated into and coordinated with the overall program activity. So one part of the responsibility of sharing or integration is known to the component. They know where we integrate with the with the program, and on the other hand, program knows where all components would be delivering their benefits and how they would integrate them. So these two junction points should be ready. The teams on both sides, the component side and the program side, should be ready to handle this transition. Only when they are both prepared, they can effectively, coordinate this thing, and they can ensure the transition and benefit delivery happens exactly well in time. Right. So then comes the oversight and integration. So far we have talked about the component planning. Now once the components have been properly planned, and now we are getting into the execution of those components, the implementation of those components. There may be cases where program manager may initiate a new component to conduct the integration effort of multiple components. This is very interesting. You see, program manager has authority to start any new component anytime. But naturally, that has to be properly amended in the program management plan. There has to be need for that. So he may design a new component whose sole responsibility is to integrate a number of components. The output of number of components is integrated in that component, and that is responsible for, unified benefit delivery of those components. I'm not talking about the whole program. I'm talking about, say, 5 components of the program are tied together through a component, through a new component. That component is responsible for putting together the results of all those 5 components and yielding them as a one whole. So big benefit is coming out of that. So this component may not be a project.
This new component may not be a project. This could just be an integrative other work, right? This component will have its team, but the work of that team is not a project. It is just to integrate the result of those 5 components and convert it into a benefit delivery, a unified benefit delivery of those 5 components. Without this step, individual components may produce deliverables, however, the benefit may not be realized. If we do not do that, maybe those projects we are doing under the program, they are producing their deliverables, but they are unable to convert them to the benefits. If that is the case, if that is the problem, then we have to design such new components which take on the responsibility of converting the deliverables from the projects under the program into the desired benefits, intended benefits, and ultimately that make it transitionable. After program components produce their deliverables and all that, now we are in the third sub phase. Now we are trying to transition and close the project, not the program. So all the components, when this starts, this component transition and closure subphase, when does this start? This will start when the first component has been transitioned and closed, and it will continue till the last component when it has transitioned and closed. So this is again within the benefit delivery phase. The component transition and closure might be a very long period. From the end of the first component till the end of the last component, this is a long period. It's just like planning. The planning started with the very first component, and it kept on happening till the planning of the last component. So it also took up considerable portion of the benefit delivery phase. Similarly, transition and closure also takes almost the similar length of time within the benefit delivery phase, but during that period, various components are being closed as they keep delivering their benefits. So after program component produces the deliverable and coordinates the successful delivery of their product, service, or result, they may be closed or transitioned into another organization and then closed. So this component which has done its job, it has delivered, now it can move on. This component is no more required. This has served its purpose. Transition addresses the need for ongoing activities such as product support, service management, change management, user engagement, customer support, from a program component to an operational support function in order for the ongoing benefits to be achieved. Now, what does that mean? Here, when it talks about the transition of the components, it is not specifically talking about the transition of the benefit. So that essentially means that the transition of the benefit is more towards the program responsibility and the consolidated integration. This transition is this component which worked within the program, and once it has done its job and it has been closed, this might be detached from the program, and maybe it can form part of the organization itself. An example of that is once we were doing the project with Nadra, there were a lot many functions we created through our projects and programs, and they were new functions. The organization did not have any operational mechanism for that. Once we experimented, once we delivered the benefit, then we shifted those whole teams to the operations as if they can handle the benefit delivery of our future operations. So once the thing has been transitioned to the operational organization, the same people who were managing that component of the project may be shifted to operations for on
basis for managing that, organization structure. So this could be the transition of the components. Okay, there may be cases where the program manager may initiate a new component. No, this we have talked about. This we have talked about. Okay. Prior to the end of the program benefit delivery phase, all component areas are reviewed to verify that the benefits were delivered and to transition any remaining projects and sustaining programs. So, by the end of the benefit delivery phase, we ensure that all the components have completed, they all have delivered what they were supposed to deliver, they all have transitioned, all the benefits have been realized, and now once this is reviewed, once this is verified, the final status is reviewed with the program sponsor and the program governance board. This all is presented to the governance board, and before they authorize the former program closure. So then, if that is okay, that all the components have done their job and they are all closed down, then we can move on to the next and third phase, and that would be the closing down of the program itself. So program closure phase is the third phase, which again has two parts in it. The purpose of this phase is to execute a controlled closure. We have got much more momentum. It is a big, huge program of say 10 years. Stopping it and closing it is not really very easy. It will move on with its momentum for some time. Therefore, we have to do it very patiently. This phase consists of two subphases, program transition and program closeout. There are two subphases, program transition and then the program closeout. Prior to program transition, the governance board is consulted. Why? To see the program has met all of its desired benefits and all transition work was performed within the component transition. So all those transitions which could have happened within during the components transition, has the work completed or some transition work is left. There is another program or sustaining activity that will oversee the ongoing benefits for which this program was started. Now this is very interesting. It is not only that programs are transitioning their results or benefits to the operations. Sometimes a program is followed by another program, and whatever benefits you have realized, they are actually to be shifted on to another program. So this program governance has to see where this had to be transitioned and has it successfully been transitioned, and are there no liabilities on the program side anymore. In the second case, where it is being transitioned to another program, there may be work to transition. There may be resources, responsibilities, knowledge and lessons learned to be shifted to another sustaining entity. Prior to closing the program manager coordinates the transitioning activities and receives approval for formal closeout of the program. So this is part of transition, that he concludes everything. He receives approval for all proper transitions, nothing outstanding against him. All the work of the program is done and it has properly been transitioned to wherever it was supposed to be. And once those approvals are received, then only can we start talking about the final program closeout. That is the second subphase of program closure phase. Once the sponsoring organization approves the program closure, numerous activities occur to formally close it down. And those activities would be discussed in 8.3.714, as we will be discussing each one of those, 9, they call it supporting areas, and those supporting areas are just like the knowledge areas of PMBOK. Now, mapping of these, the program life cycle to program supporting processes. Supporting processes were
scope, time, cost, quality, and all that from the program perspective. Okay, let me bring up. Okay, can you see this? This is the mapping of program management lifecycle phases to supporting activities. What are the supporting activities? Supporting activities are divided into the 9 knowledge areas of PMBOK. With the exception of stakeholder, there are 9 knowledge areas, and those 9 knowledge areas are shown here on the left side. And the interesting part is that this is just how they assemble the standard. This time they decided to go by alphabetical order. So this is not scope, time, cost, quality. This is like, C, communication being the first, because C comes first. And then program financial management. So here we don't talk about the program cost management, we talk about at program level, program financial management. Then after F, the I is for integration, then procurement, then quality, program resource management, program risk management. Here we don't talk about human resource management, we talk about resource management here. Program risk management, program schedule management, program scope management. So they are not in particular order except for they are alphabetically listed, right? So don't be confused about it. And against each of these so-called supporting areas, activities, what are the activities within that? As far as the communication is concerned, I'll go by the alphabetical order as shown in the book. As far as the communication is concerned, just look at the program life cycle. We have program definition, we have program benefit delivery, and we have program closure. As far as the communication is concerned, program communications are designed in program definition. So communication planning, the process communication planning 8.1.1 happens during program definition. Information distribution and program performance reporting happens in benefit delivery, because benefit delivery deals with the execution, monitoring, and control of all components. Therefore, 8.1.2 and 8.1.3 are in benefit delivery. Then looking at the financial management, we have cost estimation, we have financial framework establishment, we have financial management plan development. All this is in program definition, and in benefit delivery we have component cost estimation, component level, because benefit delivery deals with components. So program level documents, all the program level documents you will find in program definition, all the component level activities and documents you will find in benefit delivery, and all program level closures, not the component level closures, but program level closures you will find in the program closure. So the program financial closure is located in program closure. Integration, in integration, program definition we have the program initiation, the program management plan, program infrastructure development. These are the 3 things in program definition. And in benefit delivery, when we are talking about the components, program execution management and program performance monitoring and control. As I said, execution and monitoring and control is actually happening in benefit delivery. And closure, what we have here, it is not on the program closure, but before the program closure, we need to do the program transition and benefit sustainment. So program transition and benefit sustainment is located in program closure, and then only can the program go through the program closure. So the most important part of these 5 supporting areas is the integration, which is responsible for overall program integration. Procurement, if there is a need for any program at program level, the program procurement plan will be created in definition. Program procurement will happen and administered in benefit delivery, and the program closure would be closed in program closure.
Quality, again, same. Quality planning is to be done in definition, and quality assurance and control both have to happen. Program level quality assurance and control will happen in benefit delivery. Why? Because it is execution, monitoring, and control. Program resource management planning is done in definition and prioritization and interdependency management of the resources, because we are dealing with resources which are going to be, moving around within several components. So there will be some interdependencies when a resource is getting free from one activity of one component and going to another activity of another component. Risk management, we have risk management planning in definition and risk identification, analysis, response, and monitoring and control in benefit delivery. Schedule planning is here, and schedule control is in the benefit delivery. Scope planning is here in the definition, and scope control is there in the benefit delivery. Why are we not going into the detailed scoping and detailed scheduling? Why are we not planning all that? Because we are just facilitating the components. We will, whatever the program has to do, overall roadmap and all that, just we created that. We have a program management plan for that. But as far as the detailed WBS and all those things are concerned, this is just not needed here. We, at program level, would develop a program schedule planning which will indicate how the components will do their job, and then the component, whatever they do, that is going to be integrated as a program schedule or program scope. So these are just looking at these each of the reference locations in a bigger format. This is communication, finance, financials, and integration. Then procurement, quality and resource, risk, schedule, and scope. This is the whole picture. So this brings us to the end of this chapter, and after that we are going to be discussing each one of these 9 areas, and only then will we be able to call it complete. All the 5 domains would be complete after we have discussed all these supporting areas of the life cycle also. So before I can move ahead, if any questions, because today it is only I have been speaking. Read up. सर जैसे पहले आपने किया था उसी तरह से एक सजेशन ये है कि इसका अगर हम कोई क्विज वगैरह कर लें साथ के साथ तो मेरे ख्याल में बड़ा आसान हो जाएगा इसको कोरिलेट करना कॉन्सेप्ट्स को, तो अगर ये अच्छा ऐसा है कि इसका मैं एक मिनट चेक करता हूँ, आपको भी बताता हूँ। क्विज मेरा ख्याल है इसके एरियाज के लाइफ साइकिल का होगा। लेट मी और कोई सेशन? अच्छा नहीं, लाइफ साइकिल का क्विज जहां पे नहीं है। अच्छा आप ऐसा कीजिए कि आपको जो मैंने वो दिया हुआ है, ये सीआरसी क्वेश्चंस के नाम से जो फाइल है उसमें देखिए, मैं भी देखता हूँ। वो आपने डाउनलोड कर लिए मैंने सारे? सर वो अगर लिंक दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर भेज दें, उस दिन शायद ये ट्रेनिंग सेशन बंद कर दिया था मैंने, तो उसके बाद से मुझे मिला नहीं वो। ओके ओके ओके, मैं अभी आपको यहीं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। जी भाई।
असल में लाइफ साइकिल का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, मगर उसके अंदर जो 9 एरियाज हैं उनके अलग अलग क्वेश्चंस हैं। बेनिफिट क्लोजिंग, मॉनिटरिंग, प्लानिंग। लाइफ साइकिल का ये जो चैप्टर हमने अभी किया है इसके अलहदा से सवाल नहीं है, लेकिन आपको इनिशिएशन पढ़ने के बाद फिर आप इनिशिएशन का एग्जाम दीजिएगा, फिर प्लानिंग का दीजिएगा। इसलिए ये है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी ये है कि हम पढ़ेंगे 9 सपोर्टिंग एरियाज के रिस्पेक्ट में, और एग्जाम आएगा 5 प्रोसेस ग्रुप्स के हिसाब से। तो जो क्वेश्चंस हमारे पास बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं एग्जाम की तरह, सवाल प्लानिंग के, एग्जीक्यूशन के, लेकिन जब तक आप ये 9 के 9 सपोर्टिंग एरियाज पढ़ नहीं लेते, आप इनिशिएशन का भी नहीं एग्जाम दे सकते, प्लानिंग का भी नहीं दे सकते। समझ रहे हैं ये बात मेरी? ये लिंक मैं भी आपको फॉरवर्ड करता हूं। ये लिंक मैंने भेजा, जरा इसको देखिएगा। ये सिर्फ क्वेश्चंस का लिंक है, आई मीन क्वेश्चन आंसर्स के सारी जो है चीजें। लेकिन वैसे मैंने आपको कहा कि दे विल नॉट बी यूजफुल टू यू एज यू हैव नॉट स्टडीड ऑल ऑफ इट। दिस कैन ओनली बी अटेम्प्टेड कि जब आप ये सारे सपोर्टिंग ग्रुप्स कर लेंगे, फिर आपको थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो इनिशिएशन वाली हैं, कौन सी प्लानिंग वाली हैं। कुछ कुछ तो समझ आ ही गया, मतलब जैसे हमने अभी बात किया एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोल वाली चीजें सारी बेनिफिट डिलीवरी में चली गई। इनिशिएशन और प्लानिंग वाली चीजें जो हैं वो सारी आपकी डेफिनेशन में आ गई। क्लोज वाली चीजें सारी क्लोजर में चली गई। तो इस हिसाब से हम क्लैरिफाई तो कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप लोकेट कर सकते हैं जो आपके को मैंने मैपिंग दिखाई है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि पीएम जो स्टैंडर्ड फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू जैसे एग्जाम आने। ये एग्जैक्टली वही बात है जैसे पीएमबी का एग्जाम था, सारी किताब लिखी हुई है 10 नॉलेज एरियाज के हिसाब से, और सवाल पूछता है वो प्रोसेस ग्रुप्स के हिसाब से। एग्जैक्टली उसने यही काम यहाँ पर भी किया हुआ है कि यहाँ वो प्रोसेस ग्रुप्स के हिसाब से आपसे एग्जाम ले रहे हैं। जी जनाब, और कोई क्वेश्चन या कोई मजीद डिस्कशन इसके ऊपर? इकबाल साहब, सर ये जो क्लोजिंग है कंपोनेंट का, ये ट्रांजिशन से बाद में होगा या पहले होना चाहिए? कौन सा जी? कंपोनेंट हमारा क्लोज हो जाता है तो उसके बाद उसको ट्रांजिशन करना चाहिए। ट्रांजिशन पहले क्यों होता है, फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं कंपोनेंट को? देखिए मकसद उसका क्या है, उसने लिखा हुआ है ट्रांजिशन एंड क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है कि अब ये खत्म हो गया। ट्रांजिशन का मतलब है, मिसाल के तौर पे आपकी टीम है जो एक कंपोनेंट पे काम, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। उस प्रोजेक्ट की टीम ने को क्लोज करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उस टीम ने कहां जाना है, या उस काम ने कहां जाना है। उस काम को उसके घर तक, उस बेनिफिट को उसके घर तक पहुंचाना इस टीम की जिम्मेदारी है, तभी इसको क्लोज करने की इजाजत मिलेगी। प्रोग्राम में तो हमने यही किया ना, प्रोग्राम क्लोजर में भी तो एग्जैक्टली यही किया। हमने उसके भी 2 पार्ट बना दिए थे, प्रोग्राम क्लोजर के भी। उसमें हमने कहा पहले तो ट्रांजिशन करके आओ ना, और वो इंश्योर करो, उसको चेक कराओ, सारा कुछ करने के बाद अगर सब कुछ ओके है, सारे सर्टिफिकेट आपके पास हैं, तो अब आप क्लोज कर दें। ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह से अब अगर से एक कंपोनेंट है, उसने इट मे हैव टू बिकम पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन, तो वो सब पहले वो वाला अरेंजमेंट सारा करें, बेनिफिट वहां पहुंचाए, वहां खुद पहुंचे, और फिर यहां से क्लोजर दिया जाएगा, और फिर आप वहां जा सकते हैं। इसलिए ट्रांजिशन जरूरी है क्लोजर करने के लिए। बस कंपोनेंट जो ऑल एट वंस जिसका बेनिफिट आता है तो उसका फिर इंतजार करेंगे, जब ये सारे इकट्ठे उसका बेनिफिट आएगा फिर उसको ट्रांजिशन करेंगे। मतलब 10 साल का जरूरी प्रोजेक्ट हो। नहीं है कि सारे कंपोनेंट जो हैं वो ट्रांजिशन हो जाएं। देखें 2 किस्म की ट्रांजिशन है, एक बेनिफिट की ट्रांजिशन है, एक कंपोनेंट की ट्रांजिशन है।
बेनिफिट ने तो ट्रांजिशन होना ही होना है, लेकिन सारे कंपोनेंट्स जरूरी नहीं है कि वो ट्रांजिशन हो जाए। ट्रांजिशन का मतलब है कि वो खुद उठ के पूरे के पूरी टीम समेत वहां चले जाएं। हो सकता है ये काम करके इनका कोई और मजीद काम ना हो, ये सिर्फ काम ट्रांजिशन करें और खुद छुट्टी कर जाएं। जैसे प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, लोग फारिग हो जाते हैं, तो हो सकता है इनका आगे कोई काम ना हो, ट्रांजिशन करने के बाद ये वापस चले जाएं। तो उस सूरत में प्रोग्राम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर जो कोई भी डीलिंग है, उसका फिर प्रोग्राम जिम्मेदार होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये तो था लाइफ साइकिल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। एक्चुअली अब हम थोड़ा सा ट्रिकी ग्राउंड में शामिल हो गए हैं, दाखिल हो गए हैं, और उसकी वजह यह है कि पहले हम जब एक एक डोमेन करते थे तो वो डोमेन एक तो एक मुख्तसर उसके अंदर होती थी, और वो उसको हम वहीं टेस्ट भी कर लेते थे और हमारा किस्सा खत्म हो जाता था। ये डोमेन आल्दो ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि ये डोमेन जो है, और जो सवाल भी इसमें ज्यादा है इस लाइफ साइकिल के डोमेन में, लेकिन ये डोमेन कंपैरेटिवली बहुत आसान है। सिर्फ आपने एक बात समझनी है कि फॉर ईच वन ऑफ दीज नॉलेज एरियाज यू ओनली हैव टू सी, वही साइंस सारी वही है जो आपने पीएमबीओके में पढ़ी हुई है, एक्सेप्ट फॉर कि अपना लेवल जरा प्रोग्राम का बना लीजिएगा। जब आप लेवल प्रोग्राम का बनाएंगे तो सिर्फ जहां जहां तब्दीली है, जहां जहां बढ़ाव है, उसको समझने की जरूरत है, बाकी और कुछ भी नहीं। सिर्फ पर्सपेक्टिव चेंज करना है, बाकी आप ये देखेंगे इट इज कंप्लीटली जस्ट अ रेपिटेशन। और जैसे आपने पीएमबीओके में पढ़ा था, उससे सिर्फ इन्होंने वो चीजें हाईलाइट की हुई हैं जो आपके उसके लिए जरूरी है। तो मैं अभी आपको सपोर्टिंग प्रोसेसेस शुरू करा देता हूं, और हम जितना कर सके उतना एक आध एरिया निकालते हैं, और अगर आप चाहें एग्जाम भी कर लीजिएगा। लेकिन एग्जाम करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि तो वही बात है ना कि उसका इनिशिएशन का एग्जाम कैसे करेंगे आप सारों का। अच्छा जी, यहां पर ये आपका चैप्टर 10 है, सॉरी चैप्टर 8 है जी, स्टैंडर्ड का। और मैं भी आपको इसका व्यू भी दे देता हूं। ये आपको नजर आ रहा है ना अभी? दिस इज प्रोग्राम मैनेजमेंट सपोर्टिंग प्रोसेसेस, और ये एक चैप्टर में 9 सपोर्टिंग प्रोसेस सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर डिस्कस्ड। और इनको देखिए आप, ये वही जैसे अभी आपको मैंने मैपिंग में दिखाया, वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंटीग्रेशन, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी, रिसोर्स, रिस्क, स्केड्यूल एंड स्कोप। मैं वैसे एडवाइस यही करूंगा कि पहले ये सारा पढ़ लें, उसके बाद आप फिर वो पांचों टेस्ट जो हैं इनिशिएशन प्लानिंग और वो आखिर में कीजिएगा, और उससे फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कहां खड़े हैं। सपोर्टिंग प्रोसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी। द प्रोसेस डेफिनेशन एंड लेवल आर वेरी सिमिलर टू द प्रोसेस एट द प्रोजेक्ट लेवल। वही बात जो मैं कह रहा था, वही टर्म्स हैं, वही एरिया, ऑलमोस्ट वही एरिया है। मतलब कॉस्ट को फाइनेंस बना दिया इन्होंने, ह्यूमन रिसोर्स को रिसोर्स बना दिया, बस इसके अलावा तो कोई फर्क नहीं है। तो नाम वही है और काम भी तकरीबन वही है। द ओनली पर्सपेक्टिव लेवल प्रोग्राम का हो गया, लेवल थोड़ा सा हाई हो गया। सो इनको यहां पर प्रोग्राम मैनेजमेंट सपोर्टिंग प्रोसेसेस कहते हैं, और ये एड्रेस करती हैं हायर लेवल नीड्स। प्रोजेक्ट में क्या करते थे, प्रोजेक्ट में वो लोअर लेवल नीड्स को एड्रेस करते थे, उसके लिए तो हमारे वो 10 नॉलेज एरिया ही हमारा सब कुछ थे। यहां पर ये 10 नॉलेज एरिया सिर्फ हमारा काम निकालने के लिए, हमारी जो लाइफ साइकिल है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास 4 डोमेन्स और भी हैं लाइफ साइकिल के अलावा। तो यहां पे सिर्फ वो सपोर्ट का काम कर रही हैं, ये जो 9 जिसको ये सपोर्टिंग प्रोसेस कहता है। While they may utilize component level information, the activities within the process generally aggregate the information to reflect a program perspective. तो component
लेवल के ऊपर स्कोप कुछ और है, लेकिन प्रोग्राम का स्कोप क्या है? कंपोनेंट लेवल की कॉस्टें कुछ और हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल इंपैक्ट पूरे प्रोग्राम पे क्या है? तो बस सिर्फ लेवल थोड़ा सा ऊपर होने की बात है, ये प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव को पोर्ट्रे करता है, बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आपने पीजीएमपी का एग्जाम पास करना है, आपको प्रोजेक्ट की जो सोच है, या प्रोजेक्ट की जो जो आपका लेवल है सोचने का, उस लेवल पे रह के पीजीएमपी पास नहीं हो सकता। पीजीएमपी पास करने के लिए आपको हर चीज में बेनिफिट बेनिफिट सोचना पड़ेगा, हर चीज में आपको एक लेवल बड़ा बन के सोचना पड़ेगा। यहां पे बैठ के आपने डब्ल्यूबीएस नहीं बनाने, यहां बैठ के आप स्केड्यूल्स नहीं बनाने, यहां आपने चीजों को एग्रीगेट ही करना है। तो प्रोग्राम लेवल सपोर्टिंग प्रोसेसेस enable a synergistic approach for the purpose of program delivery program benefits। मतलब मकसद क्या हुआ कि हमारी जिंदगी का मकसद अब क्या बन गया? हमने प्रोग्राम बेनिफिट ही देने, और उनको देने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको ऑप्टिमाइज और सिनर्जाइज करना है। यही मेरी कोशिश है और यही मेरे सारे एफर्ट का नतीजा है। ऑप्टिमाइज करना है, लोगों से काम करवाना है, अपने कंपोनेंट मैनेजर से काम करवाना है। आपने कोई गधे की तरह काम नहीं करना सारा, लेकिन आपने हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करना है, हर वक्त तैयार की मदद करनी है। लेकिन आपका फोकस कहां होगा? बेनिफिट के ऊपर। आप उनको भी जब मदद कर रहे होंगे तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे कि मेरा बेनिफिट बेहतर से बेहतर निकल सके, जल्द अज जल्द निकल सके। तो ये फोकस रखते हुए आपने सोचना है। अब आप डिलीवरेबल ओरिएंटेड होना छोड़ दें। बहुत सी चीजें कॉमन है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह, यहां पर प्रोग्राम मैनेजमेंट में भी सपोर्टिंग प्रोसेस वही है, जैसे आपने अभी देखा, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स वहां पे होते थे, वही यहाँ पे ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में आ गई चीजें। जरा कॉन्टेक्स्ट आपका ब्रॉडर हो गया है, बाकी चीजें तो वही हैं, लेकिन उसने खास तौर पे कहा कि इसको मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है चीजों को। ये भी मैं आपसे बात कर चुका हूं कि ये जो 9 इसने सपोर्टिंग एरियाज दिखाए हैं, इनको इसने किसी खास ऑर्डर में नहीं बल्कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है। सबसे पहले ये डिस्कस करता है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन, एज यू नो, मतलब सिर्फ पर्सपेक्टिव बड़ा करके सोचना है और कुछ नहीं करना। एज यू नो, कम्युनिकेशन में वो तमाम काम होंगे जो फैसिलिटेट करेंगे, क्या था? वही डेफिनेशन की जनरेशन, इंफॉर्मेशन की कलेक्शन, इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन का स्टोरेज, उसका रिट्रीवल और अल्टीमेट डिस्पोजल, वही डेफिनेशन जो प्रोजेक्ट में थी। लेकिन लेवल सिर्फ बड़ा करना है, प्रोग्राम लेवल पे सोचना है। प्रोग्राम के लिए इंफॉर्मेशन की जनरेशन, कलेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड अल्टीमेट डिस्पोजिशन। अगर आपको वो चीजें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाली याद है तो उसको इसके ऊपर मैप करना कोई मुश्किल नहीं है। मुझे ये सारी चीजें आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्सपेक्टिव समझाने की जरूरत है। सो ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज, मतलब यूं समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन को शुरू से आखिर तक इंफॉर्मेशन को इंस्टिगेट करना कि यार ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, ये कहां से आएगी, कहां से जनरेट होगी, क्या फॉर्मेट होगा, कैसे, कौन कलेक्ट करेगा, कौन किसको देगा, कहां पे रखी जाएगी, कहां से उठाई जाएगी, और अल्टीमेटली कब ये इस इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं रहेगी और हम इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। ये सब डिफाइन करना है प्रोग्राम के लेवल के ऊपर, इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोग्राम के हवाले से चाहिए। सो दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड यू द क्रिटिकल लिंक बिटवीन पीपल एंड इंफॉर्मेशन। वही बात प्रोजेक्ट में भी करते थे, दैट आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोग्राम लेवल के ऊपर सही वक्त पे सही सही ऑप्टिमाइज तरीके से पहुंचती रहे तो हम सही वक्त पे सही डिसीजन कर सकेंगे। स्टेक होल्डर्स को ले लीजिए, इवन स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड रखना कम्युनिकेशन का कमाल है। सब कुछ कम्युनिकेशन से गुजर के जाना है, किसी भी नॉलेज एरिया की कम्युनिकेशन क्यों ना हो। और एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम ये बात करते थे कि उधर बकायदा एक प्रोसेस हुआ करता था, फोर्थ एडिशन में, थर्ड एडिशन में, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अब उन्होंने यहां प्रोग्राम में उसने अभी भी रखा हुआ है। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद क्या था?
अब तो इसने कह दिया ना, पीएमबीओके में तो आ गया कि मैनेज कम्युनिकेशन। जहां पर वो जो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल किया हुआ है, मकसद वही है मैनेज कम्युनिकेशन का। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मकसद है जी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम मैनेजर या इसका कम्युनिकेशन का जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो खुद कंधे पे उठा के कम्युनिकेशन लेके जा रहा हो, सारे खतूत उसने अपने बैग में डाले हों और वो लेके जा रहा हो। इस तरह से नहीं कम्युनिकेशन होनी। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है टू लेट एवरीवन नो हु इज सपोज टू जनरेट व्हाट कम्युनिकेशन व्हेन एंड हाउ। अगर आप ये चीज इंश्योर कर देते हैं तो बाकी मकसद आपका हल हो गया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अदर थिंग्स। आपने सिर्फ ये इंश्योर करते रहना है कि कौन सी कम्युनिकेशन कब होनी थी, और आया कि जिसको बताया है, जिसका काम है, वो इसको कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, अब बात एक चीज ये है, कम्युनिकेशन अक्कर होने से पहले जो इकदाम हैं वो हम एग्जीक्यूशन के अंदर करते होते हैं। जो कम्युनिकेशन हो जाने के बाद अच्छी हुई या बुरी हुई, ये हम कंट्रोल में देखते हैं। अब जो पीएमबीओके का नया वर्जन है 5th एडिशन के मुताबिक, वो क्या कहता है कि इधर मैनेज करें कम्युनिकेशन को, वहां कंट्रोल करें कम्युनिकेशन को। लेकिन पुरानी जो किताब थी और जिससे ये प्रोग्राम मैनेजमेंट ने क्यू लिया हुआ है, उसमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाज इन एग्जीक्यूशन, और ये वही काम कर रहा था जो मैनेज कम्युनिकेशन करता है, और फिर बाद में हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये बात हो गई। तो इसके बाद प्रोग्राम मैनेजर का काफी टाइम जो है वो कम्युनिकेशन पे गुजरना चाहिए और गुजरता है। जब प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में हम कहते थे कि उसका 90% टाइम गुजरता है कम्युनिकेशन में, तो प्रोग्राम मैनेजर तो ज्यादा से ये ज्यादा लोगों से डील कर रहा है। तो इस और फिर आपने देखा ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर के काम में तो बड़ी सारी चीजें थी, स्केजुलिंग भी करनी थी, ये भी करना था, वो भी, और बड़ी डिटेल में करनी थी। आप ये समझे कि वो काम उसके हाथ से निकल गए। अब उसने सिर्फ फैसिलिटेट करना है, उसका सिर्फ नॉलेज चाहिए। उससे भी ज्यादा टाइम वो कम्युनिकेशन में थे। यहाँ पे उसने जो कम्युनिकेट करना है, मैं तो ये कहूंगा कि 90% से तो कहीं ज्यादा है, 95 to 98% टाइम तो प्रोग्राम मैनेजर का कम्युनिकेशन में गुजरना चाहिए। मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद इन एंड अक्रॉस द प्रोग्राम बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, ये इसका डिलेमा है जी प्रोग्राम मैनेजर का। कि अब इसके पहले सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ ज्यादा जोर नीचे की तरफ कम्युनिकेशन में रखता था, थोड़ी कम्युनिकेशन ऊपर जाती थी। प्रोग्राम मैनेजर के नीचे भी उतना ही बड़ा फनल है जितना ऊपर है। ऊपर भी मतलब उसने सारी कम्युनिकेशन करनी है और उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है, नीचे भी उसने सारी करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कम्युनिकेट अपवर्ड करता था, स्टेक होल्डर से वो भी करता था, अपवर्ड भी करता था, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड में ज्यादा लोग हैं, और इवन गवर्नेंस बोर्ड जो है वो आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है। हर एक एक चीज को आप उन्हें उसको कम्युनिकेट करना है, बाकी स्टेक होल्डर को करना है, ऑर्गेनाइजेशन को करना है। तो इसका मतलब है कि आपकी कम्युनिकेशन नीड्स बढ़ गई हैं, आपकी सेंसिटिविटीज ज्यादा हो गई हैं। सो मैनेजिंग कम्युनिकेशन विद इन एंड अक्रॉस द प्रोग्राम both internally and externally is an area that cannot be underestimated or overlooked। इसको प्रोजेक्ट की तरह मत लीजिएगा, इसको कम्युनिकेशन को यहाँ प्रोजेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। Significant problem may occur if sufficient effort is not committed to communication, especially in program. Program communication management is different from project communication, since it affects a wider array of stakeholders with widely varying communication. Different communication approaches and method of delivery are required। तो यही बात मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था। आल्दो लगता नहीं है कि इतना फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है प्रोग्राम लेवल की कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जैसे आपने देखा टेबल में मैपिंग में कि हमारे पास जितनी भी प्रोसेस हैं वो ये तीन है। कम्युनिकेशन प्लानिंग है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग है। और ये तीनों चीजें जो है, इनमें से अगर आप ये जहन में रख लीजिए कि प्रोग्राम डेफिनेशन का मतलब है इनिशिएशन प्लानिंग, तो अब जरा बेशक इसको मैप कर लीजिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। तो आपको कम्युनिकेशन प्लानिंग कहाँ होती थी? प्लानिंग में होती थी। तो ये प्रोग्राम डेफिनेशन में होगा। बेनिफिट डिलीवरी में ये क्या चीज है? ये है एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो वो तमाम काम जो एग्जीक्यूशन में होते थे कम्युनिकेशन के, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन में, प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन में और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, वो सब यहां होंगे।
इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्जीक्यूशन में होता था, ये अब इसकी बेनिफिट डिलीवरी में हो रहा है। प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, ये थर्ड एडिशन के ऊपर पुरानी टर्म्स इस्तेमाल की हुई है इसने, तो ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में होता था प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, अब तो ये बन गया है कंट्रोल कम्युनिकेशन, सॉरी हाँ कंट्रोल कम्युनिकेशन। तो ये वाला काम जो है कंट्रोल कम्युनिकेशन वाला या प्रोग्राम परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग वाला, ये अब यहां पर बेनिफिट डिलीवरी में दोनों चीजें होंगी, ये वजह है। और अगर आपको ये बात समझ आ जाती है कि डेफिनेशन मींस इनिशिएशन एंड प्लानिंग एंड बेनिफिट डिलीवरी मींस एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो मेरा ख्याल है आपका आधा दलदल तो यही दूर हो गया, और आपकी प्रिपरेशन जो करने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बहुत आसान होगी, कि आपको पता है कि इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज एग्जीक्यूशन, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इज मॉनिटरिंग, पता है हमें, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आल्दो नेचुरली जिस तरह की कंफ्यूजन थोड़ी सी, जिस तरह मैंने डिस्कस किया, इन्होंने क्रिएट की हुई, अगर उसी तरह ये किताब भी स्टैंडर्ड भी उसी तरह लिखते जैसे एग्जाम लेना है तो बात और ज्यादा आसान हो जाती। आप जरा थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन आप इंटेलिजेंट बीइंग्स होने के हवाले से इस चीज को समझ जाएंगे और इसको मैनेज कर लेंगे, तो ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, चीजें काबू में आ जाती हैं। प्रोग्राम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोग्राम स्टेक होल्डर एंगेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड, ये भी हमें पता है कि कम्युनिकेशन करनी है तो लाजमी पता है स्टेक होल्डर को एंगेज रखना भी कम्युनिकेशन वाला ही काम है ऑलमोस्ट, इसके अलावा भी कम्युनिकेशन है, तो ये आल्दो एक है, एक जैसा काम है, और पहले स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन ही का पार्ट होता था फोर्थ एडिशन पीएमबीओ के तक, फिफ्थ में इन्होंने इसको अलग किया है, और उससे पेशतर में होता ही नहीं था, थर्ड एडिशन में तो स्टेक होल्डर होता ही नहीं था। एक तो ये चीज, और दूसरी बात ये कि स्टेक होल्डर बजाते खुद एक डोमेन जो बन गया यहाँ पर, तो इसलिए ये भी इसकी नीड यहाँ से इसलिए भी खत्म होगी। Each activity may involve effort from one or more persons or groups based on the needs of the program. Each activity occurs at least once in every program and occurs in one or more program phases. So ये जो हम बात कर रहे हैं कि एक जो ये इसकी एक्टिविटीज हैं उसके लिए बंदा और ग्रुप्स की जरूरत है, प्रोग्राम की नीड है, और ये किसी एक जगह भी होगी, मतलब अगर प्रोग्राम डिलीवरी में एक चीज होनी है तो वो प्रोग्राम डिलीवरी में ही होगी, वो बार बार इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट हैपन इन एनी अदर लाइफ साइकिल के फेजेस में। Although the activities are presented here as discrete elements with well-defined interfaces, in practice they may overlap and interact in ways not detailed here. वही बात है, ये हर जगह मिलेगा, आपको पता ही है, मतलब वो जैसे हमने कहा ना, वो क्या चीज थी, वो जो बेनिफिट डिलीवरी की हम बात कर रहे थे, और हम कह रहे थे कि बेनिफिट डिलीवरी में कंपोनेंट्स की इनिशिएशन वाली चीजें और क्लोज आउट वाली, ये तो ओवरलैप कर रही हैं, कितना सारा ओवरलैप कर रही हैं, पहले कंपोनेंट के स्टार्ट से आखिरी कंपोनेंट के स्टार्ट तक तो उसके वो ऑथराइजेशन ही चल रही है, और पहले कंपोनेंट के फिनिश से आखिरी कंपोनेंट के फिनिश तक उसका क्लोजर ही चल रहा है, तो ओवरलैप तो होगा, इंटरेक्ट भी होगा। तो बेसिक कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इन द पीएमबीओ के गाइड आर एडिक्वेट। कहते हैं वहां से पढ़ लें, वो तो आपको वैसे ही आती हैं, आप सारे पीएमपी हैं, तो उसको एक नजर जरूर मार लें, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन वहां से पढ़ते हैं या कोई भी चैप्टर वहां से पढ़ते हैं, तो जरा अपना पर्सपेक्टिव आपने प्रोग्राम वाला रख के पढ़ना है। वहां पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट के हवाले से, जहां कहीं प्रोजेक्ट का लफ्ज है तो आपने कहना कि ये नहीं मैं बेनिफिट लेवल पे सोच रहा हूँ, मैं बड़े लेवल पे सोच रहा हूँ, मैं उसके लेवल की कम्युनिकेशन की बात पढ़ने की या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन प्लानिंग में हम करते हैं, ये डिटरमिन करते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, कम्युनिकेशन नीड्स क्या होंगी स्टेक होल्डर्स की, और कब किसे कब कहां कब क्यों कैसे कम्युनिकेट किया जाए, वही बातें आप जो पहले पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट जो है क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ताकि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोग्राम एंड देन फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर विद द प्रॉपर कंटेंट एंड डिलीवरी मेथड हो सके। स्टेक होल्डर्स के अंदर आपको पता ही है कि सारी दुनिया शामिल हो सकती है, जो भी डेफिनेशन है स्टेक होल्डर की। एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट, प्रोग्राम्स आर जनरली मोर कॉम्प्लेक्स, ये भी हम जानते हैं। एज द प्रोग्राम प्रोग्रेसेस, अदर कंपोनेंट्स आर एडेड एंड न्यू स्टेक होल्डर्स बिकम नोन, ये भी हमने 2-3 दफा इस बात को रिपीट किया है। Considered when planning communications,
तो थोड़ा फर्क करना है आपने कि आप प्रोग्राम की कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन करते वक्त, कम्युनिकेशन प्लान बनाते वक्त बाकी प्लान्स के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि इसको कुछ टाइम अलहदा से देने की जरूरत है। सिंस प्रोग्राम जनरली टेक लॉन्गर टू कंप्लीट, ज्यादा टाइम है, 10 साल का प्रोजेक्ट है फर्ज करें, टीम मेंबर ये सब लोगों के दरमियान एक जबरदस्त बॉन्ड क्रिएट करना है आपने कम्युनिकेशन के थ्रू। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म आपने हर आने जाने वाले के हिसाब से के साथ कंसिस्टेंट रखना है। मल्टीपल वेंडर्स आर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टीम, द नंबर ऑफ स्टेक होल्डर इज इंक्रीज्ड। कल्चरल लैंग्वेजेस डिफरेंसेस हो सकते हैं, टाइम जोन्स के, अदर फैक्टर्स के, ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखिए। ये भी हमने पीएमबीओके में पढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में कम्युनिकेट कैसे करना है। ऑल्दो कॉम्प्लेक्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्लानिंग इज वाइटल टू द सक्सेस ऑफ एनी प्रोग्राम। अगर आपको ये पता हो कौन सी चीज कब कहां क्यों कैसे और किस फ्रीक्वेंसी से कम्युनिकेट करनी है, अगर आपने मतलब पता होने का मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में है, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये चीज अगर होगी तो हम उसे रेफर कर सकते हैं, बल्कि ना सिर्फ हम बल्कि कोई भी रेफर कर सकते हैं। इससे जनाब जो चीजें निकलनी है वो एक तो कम्युनिकेशन का प्लान निकलना है प्रोग्राम का, और दूसरी स्टेक होल्डर की रजिस्टर निकलना है, का लिस्ट निकलनी है कॉरेस्पॉन्डिंग दी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट किस स्टेक होल्डर की तरफ से आई है। इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है, ये एग्जीक्यूशन है, ये वैसे मैं एग्जीक्यूशन कह रहा हूं, लेकिन अगर लाइफ साइकिल के हवाले से देखा जाए तो ये कहां है, बेनिफिट डिलीवरी के अंदर है। ये एक्टिविटी जो है टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर तक पहुंचाना सही फॉर्मेट में, दिस इज इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन। या इसको इंश्योर करना, मैं तो ये कहता इंश्योर करना ये जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर इंफॉर्मेशन आप अपने कंधे पे उठा के बैग में डाल के लेके जा रहे हो। इंफॉर्मेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसीविंग पार्टीज इंक्लूडिंग द क्लाइंट स्पॉन्सर, कंपोनेंट मैनेजर्स एंड इन सम केसेस द पब्लिक एंड द प्रेस। तो मीडिया से इधर उधर से सब लोगों से आपने कम्युनिकेट करना है, किससे कब क्या कम्युनिकेट करना है वो आप यहां डिटरमिन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या क्या स्टेटस इंफॉर्मेशन हो सकती है, लोग कहते हैं जी व्हाट इज इन इट फॉर मी, उनको उसका सवाल का जवाब दिया जा सकता है। चेंज रिक्वेस्टों की नोटिफिकेशंस हैं, बजटरी इंफॉर्मेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फाइलिंग्स हैं, गवर्नमेंट के कोई टैक्स जमा कराना है, लॉज रेगुलेशन है, कोई और हिसाब किताब है, प्रेजेंटेशंस हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज के सामने, पब्लिक अनाउंसमेंट्स हैं, प्रेस रिलीजेस हैं, मीडिया इंटरव्यूज हैं, दीज ऑल आर वेरियस काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन। सो हाउसोएवर यू वांट टू कम्युनिकेट विद whomsoever, उसका फॉर्मेट बना लें और उस फॉर्मेट के हिसाब से और उस वक्त और उस फ्रीक्वेंसी के साथ उससे कम्युनिकेट करें। इसमें जनाब जो कम्युनिकेशन की कंसिडरेशंस हैं, प्रोग्राम मैनेजर नीड्स टू बी हाईली स्किल्ड। वी अंडरस्टैंड दैट प्रोग्राम मैनेजर शुड translate the program strategic goals and day-to-day tactical and operational activities. It is also important that the program manager effectively communicates at all levels. Although a program manager generally communicates at a higher level than the project manager, program managers should be able to communicate details to the program team members as easily as they describe concepts to exec. देखें, जो प्रोग्राम की टीम है ना, ये प्रोग्राम मैनेजर की अपनी टीम है, और बेशक उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स या कंपोनेंट मैनेजर्स भी शामिल हैं, लेकिन मोर क्लासिकली these are those people who are working other than the components, जो प्रोग्राम मैनेजर की अपनी टीम है जिसने ये सारे काम करने हैं। कम्युनिकेशन कंसिडरेशंस में, given the wide range of communication scenarios that a program manager may experience, having excellent written and oral communication skills is important for the program success. ये तो कम्युनिकेशन की बात है जी, ये तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आज का मास्टर्स का पीएचडी का भी स्टूडेंट पाकिस्तान से पढ़ के निकलता है, सही अंग्रेजी नहीं बोल सकता, लिख नहीं सकता। ये सबसे बड़ा डिलेमा है हमारा, और प्रोग्राम मैनेजर बड़ा सीनियर रोल है। मैं तो कहता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजर जो बंदा बनता है उसने बड़ी रिपोर्टिंग करनी होती है, उसने बड़ी बातें करनी है, प्रेजेंटेशंस देनी है, वो गलत अंग्रेजी बोलेगा, गलत कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, तो इस चीज में हमें ट्रेन होने की जरूरत है। और अगर आप प्रोग्राम मैनेजर बनने की बात करते हैं तो आला होना चाहिए जनाब, इससे कम में काम नहीं चलेगा। मैं वो भी कल परसों देख रहा था, सैमसंग वालों ने जो S8 की लॉन्चिंग सेरेमनी की है,
वो घंटे की सेरेमनी थी जी, उसके अंदर कोई 4 या 5 स्पीकर्स आए हैं और क्लासिकल इतनी मतलब ऐसा रबत और ऐसी फ्लुएंसी और ऐसी फ्रीक्वेंट मतलब जबरदस्त तरीके से उन लोगों ने कम्युनिकेट किया। प्रेजेंटेशंस वर जबरदस्त होती हैं, जितने भी इवेंट होते हैं इस तरह के बड़े बड़े लॉन्चिंग सेरेमनीज वगैरह में। लेकिन बात यह है कि ये उन कंपनी के वो क्या कहते हैं एग्जेक्टिव्स हैं, लाजमी बात है कि अच्छे होंगे, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल स्पीकर्स तो नहीं है सारे, बट एवरीवन वाज एक्सीलेंट। तो कहने का मतलब है अगर आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचे हैं तो फिर जनाब जब खुदा जब हुस्न देता है अदाएं आ ही जाती हैं। तो अब आप अगर प्रोग्राम मैनेजर बनना चाहते हैं तो फिर अदाएं शदाएं तो कुछ कुछ आनी चाहिए ना जी। तो ये स्टाइल कम्युनिकेशन का और बिल्कुल आपका एक तो बात ये समझ लें, प्रोग्राम मैनेजर जरा एग्जेक्टिव स्टाइल का बंदा होता है और इसको फिर बात भी सही करनी चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेशन स्किल होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन, the way the recipient should interpret the message and the effects of message should be carefully considered। देखिए जी एक और भी मसला है हमारे साथ, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन आप कंसाइज बात नहीं कर सकते। आप कहानी डालनी शुरू करते हैं तो बात ही नहीं खत्म होती। आपको पता होना चाहिए किस बात पे एम्फेसिस करना है, कौन सी बात तमहीद है, उसको कितना मुख्तसर रखना है, किससे कैसे बात की जाए, किस बंदे को कितना जज़ब हो रहा है, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको उससे ज्यादा ओवरबर्डन ना किया जाए। जनाब ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास तो होने ही चाहिए, प्रोग्राम मैनेजर के पास तो लाजमी होने चाहिए, बल्कि बहुत ही आला दर्जे के होने चाहिए। Communication skills are part of the general management skills and are used to exchange information। और जो जनरल मैनेजमेंट स्किल्स हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, दैट इज कि किससे कब कहां बात करनी है, राइट पर्सन गेट द राइट इंफॉर्मेशन एट द राइट टाइम बाय द राइट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दिस इज योर जनरल मैनेजमेंट स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल वो तो थोड़ा जज्बाती किस्म के स्किल्स हैं, इमोशनली कैसे आपने लोगों को अटैच करना है अपने साथ। जनरल मैनेजमेंट स्किल्स आर also include the art of managing stakeholder requirements। ये आपकी ड्यूटी है एज अ प्रोग्राम मैनेजर कि स्टेक होल्डर्स की को साथ हाथ पकड़ के लेके जाना है हर जगह, एंगेज रखना है उसे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे तो आप उसको हैंड होल्डिंग उसकी कर सकेंगे, नहीं तो ये मुमकिन नहीं होगा। प्रोग्राम मैनेजर इज द की कम्युनिकेटर फॉर द प्रोग्राम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी प्रोग्राम के सारे लोगों को, उनकी जुबान है ये। It is beneficial for the program manager to have a defined and documented strategy for the wide spectrum of communication requirement। ये डेवलप करना पड़ेगा कि अगर प्रोग्राम मैनेजर को पता हो कि कौन से लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट, स्टेक होल्डर मैनेज करने की जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं उसमें हम डिफाइन कर लेते हैं कि कौन से स्टेक होल्डर मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे कितना ज्यादा इंटरेक्शन रखना है और कितनी कम्युनिकेशन कैसे कम्युनिकेशन करनी है। ये जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आप बनाएंगे इज यूज्ड थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, even if it is used as a quick reference। भले आपको कभी कभी देखना पड़ेगा अच्छा यार क्या लिखा हुआ था फलाने से कैसे बात करनी, जैसे कभी कभी बात होती है, हो सकता है उसकी स्ट्रेटजी ज़हन में ना रहे तो उसको आप रेफर कर सकते हैं to ensure that the appropriate message is delivered to the correct audience। Communication strategy should be updated regularly as audience and messages change throughout the course of the program। आपके स्टेक होल्डर बदलते रहेंगे और दूसरी बात यह है कि नए आते रहेंगे, उनको कहीं प्लेस करना है, तो कम्युनिकेशन की जो स्ट्रेटजी है उसको अपडेट रखें, लिस्टों को स्टेक होल्डर की लिस्टों को अपडेट रखें, रजिस्टर को अपडेट रखें। फिर आ जाता है जी इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड रिट्रीवल का मैकेनिज्म। एक्चुअली ये वही बातें हैं जो हमने कहा था, गैदरिंग, उसके बाद जनाब उसको रिट्रीव करना, उसको रखना, इन सारे चीजों के फ्रेमवर्क या मैकेनिज्म बने होने चाहिए, वही बातें सारी यहाँ की जा रही हैं। Information is gathered and retrieved through a variety of media, manual filing हो, electronic databases हो, software हो, whatever। engineering drawings हैं, design specification कैसे कहाँ रख रहे हैं आप, retrieval आपका कहाँ है, उठा कहाँ से रहे हैं information। When one database is used, it is important to analyze and assign access to the different files that are present। Same access requirements exist for a system that has several databases। आप मैनुअल चाबी दे दें किसी को कि ये ताला खोल लो, अंदर से फाइल निकाल लो, या आप पासवर्ड दे दें किसी को, बात तो एक ही है, लेकिन ये कि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रख रहे हैं। करंट आईटी एनवायरनमेंट अलाउज फॉर रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब तो कंप्यूटर खुद ही डिसाइड कर लेता है या उसके सिक्योरिटी के
में प्रोग्राम कर देते हैं कि किसको क्या इंफॉर्मेशन जाए, सब लोग कनेक्टेड हैं, लेकिन जिसको जो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए उसको वही जाती है। That situation requires careful planning and setup of the program storage and retrieval system. इसी तरह इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड वो भी आप पहले से डिफाइड करके रखें, प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, कौन जिम्मेदारी होगी, किसकी होगी, किस तरह ये सारा काम चलेगा। अभी जैसे आप लोगों को ये खुद ब खुद ये मैसेज आ जाता है कि जनाब आज मीटिंग है, तो वो बेसिकली दैट इज ऑटो रिमाइंडर बना हुआ है ना, कि कंप्यूटर ने संभाला हुआ है काम, नहीं तो शायद मुझे आपको कॉल करना पड़े या याद कराना पड़े, तो वो काम कंप्यूटर ने संभाल लिया। मेथड्स क्या है जी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के? मैं फेस टू फेस आपसे बात कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिकली डिजाइन है स्केजुलिंग और इन सब कामों के लिए, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस है। इसके बाद रिगार्डलेस ऑफ द डिसिप्लिन, कोई भी मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शुड रिमेन इन प्रोग्राम्स कंट्रोल। ये बहुत जरूरी है कि प्रोग्राम के हदूद के अंदर मेथड रहे, मेथड बाहर ना निकल जाए, पता लगे जी पब्लिक हो गया, मीडिया में जा रही है सारी चीजें। प्रोग्राम के कंट्रोल में होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आप इसको बिल्कुल ही बाहर नहीं भेज सकते। इनकरेक्ट मैसेज टू एन ऑडियंस मे एंड ऑफन विल कॉज प्रॉब्लम टू द प्रोग्राम एंड इन सम केसेस लीड टू द स्टॉपेज ऑफ अ प्रोग्राम। तो ये बात भी बड़ी जरूरी है कि जो बात करें वाज़ेह करें। एक तो वैसे ही सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात है कि वजाहत के साथ करें कि कहीं मिस इंटरप्रेट ना हो जाए। प्रोग्राम कम्युनिकेशन मैनेजमेंट कैन बी चैलेंजिंग एंड मे रिक्वायर अ फुल टाइम मैनेजर। अगर आपका प्रोग्राम इतना बड़ा है तो आप अपने साथ एक कम्युनिकेशन मैनेजर रख लें, भले ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आपका प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप समझते हैं नहीं कर सकेंगे, तो आप अपने साथ कम्युनिकेशन मैनेजर रख लें। लेसन्स लर्न डेटाबेसेस हैं जी, ये पुराने नॉलेज को कंपाइल किया हुआ है। This knowledge may be acquired from executing similar and relevant program in the past. ये हमें पता ही है। Lesson learned are critical assets to be reviewed. Lesson learned database is updated at the completion of a component. ये सिंपल बातें हैं, आप लोग इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ। और इसका लेसन लर्न का आउटपुट क्या है जी? प्रोग्राम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर एप्लीकेबल हो वो डेवलप हो जाता है, लेसन लर्न अपडेट हो जाते हैं, डेटा आर्काइविंग और रिट्रीवल इंस्ट्रक्शंस बन जाती हैं। फिर आपकी आखिरी चीज है जी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, एंड इसको आप यूं समझिए कंट्रोल कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस है। और ये कहां होगा? ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में होता है, लेकिन यहां कहां होगा? लाइफ साइकिल, प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में, यहां पे वो बेनिफिट डिलीवरी ही में होगा। Program performance reporting is the activity of consolidating performance data to provide stakeholders with information about how resources are being used to deliver program benefit. मतलब ये एनालिसिस के नतीजे में कम्युनिकेशन होती है। जो पहले कम्युनिकेशन की है वो रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स थी, फलाने फलाने ने ये कर लिया, तुम इधर आ जाओ, तुम उधर चले जाओ, वो प्रेस रिलीजेस हैं, इस किस्म की चीजें। ये क्या चीज है? परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग एनालाइज्ड डेटा की रिपोर्टिंग है ये भी रिपोर्ट, लेकिन ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। ये जब हमने एनालिसिस कर लिया कि अच्छा काम बुरा काम, तो उसके बाद जो हम उसके टेबल्स और रिपोर्ट्स और चार्ट्स बनाएंगे वो चीजें परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एग्रीगेट्स ऑल द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट्स एंड नॉन प्रोजेक्ट एक्टिविटी टू प्रोवाइड अ क्लियर पिक्चर ऑफ द प्रोग्राम परफॉर्मेंस एज ए होल। मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट बन जाती है आपकी पूरी की पूरी। दिस इंफॉर्मेशन इज कन्वेड टू द स्टेक होल्डर बाय मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। अब ये भी इंफॉर्मेशन जब पहुंचाएंगे स्टेक होल्डर्स को, तो वो वही इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन या प्लेटफॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडिशनली दिस इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू प्रोग्राम टीम मेंबर्स कंसिडरिंग प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड देम द जनरल एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम परफॉर्मेंस। ये जनाब टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम कस्टमर और स्टेक होल्डर रिगार्डिंग द प्रोग्राम परफॉर्मेंस शुड बी गैदर्ड बाय प्रोग्राम मैनेजमेंट, एनालाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने कहा था ना कि ये एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा हमें मिलता है उसको हम एनालाइज करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट बनती है। तो पीएमबीओके में तो बहुत वजाहत के साथ इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां जरा थोड़ा सा वेग है, लेकिन ये है कि ये दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। आउटपुट इसका क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअली एंड आर स्पॉन्सर रिक्वायर्ड डाटा रिपोर्ट्स एंड अकम्पनिंग फॉर्मेट्स निकल आते हैं, कस्टमर की फीडबैक आ जाती है, पीरियोडिक रिपोर्ट्स आ जाती हैं जो प्रेजेंटेशंस और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की सूरत में शो की जा सकती।
ये जनाब, ये हमने कम्युनिकेशन को तो खत्म कर लिया और टाइम भी हमारा पूरा हो रहा है और आखिरी कुछ 4-5 मिनट है। इसमें अगर कोई क्वेश्चंस हो तो इसमें कर लीजिएगा जनाब। कोई पॉइंट है नहीं? नहीं सर, इट्स ओके। पोजीशन या ओके जी, मेरा ख्याल है अभी जो आगे वाला पोर्शन है वो इंशाल्लाह एक एक दो दो पोर्शन हम इकट्ठे एक एक दिन में करते जाएंगे। आज तो 4th डे है वीक का, तो इसका मतलब है हम मंडे को मिल रहे हैं फिर नेक्स्ट। सर नेक्स्ट मंडे को नहीं था मैं। मंडे को नहीं, तो हम जी नेक्स्ट ट्यूसडे को मिल रहे हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे को। जी सर, ट्यूसडे को मिल रहे हैं। और उससे जो नेक्स्ट वीक है मेरी नोकिया में ट्रेनिंग है, पीएमपी की मैंने करवानी है, तो वो ओके, डे टाइम में है, एक वीक की। आई मीन ये डेट क्या होगा? 16th अप्रैल से सर। नहीं वो मतलब ट्यूसडे है मंडे है? नहीं, वो 16th अप्रैल संडे है, 17th अप्रैल मंडे है, तो ओके 16 से मंडे, 20 तो इसका तक है। मतलब है ये मंडे और अगला मंडे दोनों आप क्लास नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। फुल वीक मेरी क्लास है, ट्रेनिंग है पूरी, पूरे वीक की अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मैं यानी रिकॉर्डेड से भी देख सकता हूँ। आई मीन कि मैं वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बाकियों का, या अगर थोड़ा सा इवनिंग में शिफ्ट हो सकता है अगर बाकी अवेलेबल हैं तो। अच्छा जिशान, आप तो पाकिस्तान में आ गए हुए हैं? जी सर, मैं पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, इसका मतलब है कि वो जो उधर के टाइम का मसला था वो तो अब नहीं रहा, अब तो जी आप पाकिस्तान नहीं टाइम जी के हिसाब से अटेंड कर सकते हैं। जी जी कब तक हैं आप जी यहाँ? जी। मैं 29 अप्रैल तक हूँ सर। 29 अप्रैल तक। अच्छा जी, अब मसला सिर्फ रह जाता है फहद का। फहद, आपको क्या सूट करता है? हम अगर टाइम को थोड़ा आगे पीछे करें तो कौन सा टाइम आपके लिए अभी भी आप मतलब मुश्किल में है ना थोड़ा सा? सर इस तरह है कि अभी जैसे यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे हैं सुबह और के 8 बजे? अभी बस मैं ये ट्रेनिंग खत्म हुई है तो अभी मैं I'll get ready and I'll leave for my office। तो मेरे ख्याल में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक तकरीबन 9 घंटे का डिफरेंस है शायद बिटवीन कनाडा एंड पाकिस्तान अभी इस वक्त जी आजकल। या तो सर आप 10 मतलब बेस्ड ऑन एवरीवन कोई कोई टाइम प्रपोज करें, देन आई कैन लेट यू नो इफ आई कैन मेक इट और नॉट। लेकिन डेफिनेटली अभी जो टाइम हो गया है अब से लेकर 5 PM कनाडा टाइम तो मैं नहीं कर हाँ। सकता श्योर। तो फिर एक ऑप्शन ये हो सकती है कि वो 3 दिन, वो 4 डेज हम स्किप करके नेक्स्ट वीक से मैं वापस उसी स्केड्यूल पे हम कर सकते हैं। अच्छा ये जो अभी करंट स्केड्यूल है, एक वीक का मसला है मुझे, अच्छा, वो एक ट्रेनिंग आ गई है दूसरा नोकिया मुझे की। ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि हम 5वां दिन भी हफ्ते का शुरू कर लें? मतलब कल भी अगर हम क्लास कर लें? सर फ्राइडे मैं नहीं हो कल? सकता, फ्राइडे मेरी फुल डे क्लास होती है, ऑलरेडी बुक है अच्छा मेरे अच्छा, फ्राइडे सारे। ओके ओके। सर उसमें चले एक और सजेशन है कि हम अभी ज़्यादा लोग पाकिस्तान में हैं, तो हम्म, फहद के जब 9 PM होंगे वहाँ पे, यहाँ पे 6 AM होंगे, तो हम 6 to 8 इन द मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, 6 to 8 पाकिस्तान टाइम है वो अगर करें तो फहद अगर 9 से 11 अवेलेबल है रात में, तो मेरा ख्याल है वो सेकंड ऑप्शन हो सकती है। क्यों जी, बाकी लोग क्या कहते हैं? सुबह जी 6 से 8 सर, पाकिस्तान। हाँ मुझे मुझे अर्ली मॉर्निंग मुझे भी सूट कर सकता है, मुझे इशू मैं कर तो सकता हूँ। 4 बजे इधर होंगे, अगर पाकिस्तान में 6 तो इधर 4 बजे सुबह होगी। अच्छा। नमाज से दिक्कत पढ़ के ना। तो क्या ख्याल है, फिर 6 से 8 कर लें? ये तैमूर का मतलब मसला है। 8 से 10 8 से जो ना कर ले, 8 से या आठ 10, से दस या 10 12 या लेकिन 9 11 इस तरह। 8 से 10 अगर हम चले 8 से 10 को बताइए जी, ऐसा ना आपको सूट करता है? जी सर, 8 से 10 वो पाकिस्तानी मुझे फहद पे सूट काफी करता है। लेट हो जाएगा। बाहर का काफी लेट हो जाएगा, यस। जी जी, उसका रात 11 से 1 हो जाएगा फिर ऑलमोस्ट। चले, ग्यारह। नेक्स्ट वीक है हमारे पास, उसके अंदर प्लान कर लेते हैं हम, मजीद सोच लेते हैं चले इस पे। जी, अब मैं ऑप्शन छोड़ता हूँ आपके पास। जी सर। और अभी 7 to 9 दोनों और अभी 8। एक पाकिस्तान में, दो सऊदी अरब में और एक कनाडा में है। दो पाकिस्तान में, 2 इस सऊदी वक्त अरब। तो हाँ। सर भी है ना पाकिस्तान में। हाँ, मैं नहीं सर, मुझे तो तो मेरी फिक्र नहीं है आप।
सर तो है ही पाकिस्तान में, आपकी बात कर रहे जी। एक पाकिस्तान में, 2 सऊदी अरब में और एक कनाडा में, हम 4 जो स्टूडेंट्स हैं। जा जा जी ठीक है, चलें इसमें सोच लेते हैं जरा टाइमिंग, वो टाइम जोन सामने रख के पेपर पे ना, तो ठीक है। वीकेंड पे सोचते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ट्यूसडे को है ना, सेम ठीक टाइम है। पे। या तो हम ट्यूसडे को इंशाल्लाह मिलते हैं। अगले जी हफ्ते में हम इंशाल्लाह, फाइनल कर लेते हैं कि आगे क्या करना है, और फिर इंशाल्लाह उसके हिसाब से, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे चीजें, मुझे 4-6 लेक्चरों में हो जाएगा सारा कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर ट्यूसडे को तो हम इसी टाइम पे मिलेंगे ना, सेम टाइम? जी जी इसी टाइम, जी जी, इसी टाइम। ट्यूसडे इसी टाइम पे है, या ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हम इसी टाइम पे हैं। ओके अगला ओके हफ्ता यही ओके ओके। टाइम। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नाइस वेरी मच, टॉकिंग, थैंक यू, टेक अस्सलाम वालेकुम। टेक केयर।